Okay, so this is the equation that we need to solve. And at this stage, I can make use of important insight from this equation. And the insight is this first term. This first term is involving those terms which depends only on x. This second term is involving only those terms which depend on y, and this third term it involves those terms which depend only on z. And this k square is a constant. So if you look at this equation can only be satisfied if each of these terms is a constant because they are independent of one another. So this term must be equal to some constant, this term must also be equal to some constant, and this term must also be equal to constant. If that happens, then this equation will be satisfied. Okay. So based on this, I will say that this first term, this thing, f double dash x divided by f of x must be equal to some constant, and that constant we call it minus kx square. Similarly, the second term, we assume that this is also going to be equal to some constant, and that constant is going to be minus ky square. And finally, h double dash z divided by h of z is also equal to some constant, and we will call it minus kz square. So where kx, ky, kz are constants. And now what we have is, we have three equations: this equation, this equation, and this equation. So let me write this equation in a proper manner. Now I'm going to replace this f double dash by its actual meaning. This is actually the second derivative of f of x with respect to x square. Bring this term over here and then bring it to the left hand side. So you end up with plus kx square f of x equal to 0. Similarly, this equation is basically this equation, the second derivative of g plus ky square g of y equal to 0. And this third equation is second derivative of h with respect to z square plus kz square h of z equal to 0. So basically, you have now three independent ordinary differential equations. So if this is now second order ordinary differential equation. Similarly, this is also second order ordinary differential equation. I will call it in x. This is in terms of y, and this is second order ordinary differential equation in z. Before I continue with my lecture, let me share the attendance link for today's lecture. So in the chat window, now you can access the attendance link of today's lecture. Now, before I continue with the solution of this equation and this equation and this equation, let's also uh, uh, derive another equation, because I have replaced this thing. If you look at it, this thing
it has been assumed to be equal to this thing. Similarly, this term and this term. So this term has been replaced by minus kx square. This term has been replaced by minus ky square, and this term has been replaced by minus kz square. So from this equation, you can see what we get is we get that k square must be equal to kx square plus ky square plus kz square. So this is one equation that we will later on use. Okay. So now you know the relationship of k square with these three constants that we have introduced. Okay. And this is the relationship that k square must be equal to kx square plus ky square plus kz square. Okay. Let's find out what type of solution these second order ordinary differential equations will have. Okay. So this first equation in terms of x, its solution will be something like this. A plus e power minus j kx into x plus a minus e plus j kx into x. And now mathematically this is going to be the solution, but in terms of field theory, what you will say that this equation or this part of the solution is representing a wave which is traveling in the positive x direction, and this part of the solution is representing a wave which is traveling in the negative x direction. So in a similar manner, you can write down the solutions for the remaining equations, the second order equations, and the meaning will be exactly similar. So now what type of solution this equation will have? You will say the solution will be something like b plus e power minus j ky into y plus b minus e plus j ky to y. And again, same meaning. This is representing a wave traveling in the positive y direction. This represents a wave traveling in the negative y direction. And finally, the third equation. This equation solution will be something like c plus e power minus j kz into z plus c minus e plus j kz into z. In a similar manner, this is wave traveling in the positive z direction. This is a wave traveling in the negative z direction. So now you can clearly see the phenomena that when we don't put any restriction on the components of the electric field, so electric field x component, which we are trying to find out, because it is dependent on x, it is dependent on y, it is dependent on z. So because of that reason, the associated wave is now traveling in all possible directions. It is traveling in all possible directions. In order to simplify our analysis, what we can do is we will focus only on those solutions which represent wave traveling in the positive direction only. So out of the two solutions of f of x, we will focus only on this solution, which represent a wave traveling in the positive x direction. Similarly, we will focus or consider only this solution, which represent a wave traveling in the positive y direction, and we will focus only on this
solution which represent the wave traveling in the positive direction. So what I am saying is, consider waves traveling in positive directions. So this is what we are considering. Okay, so considering waves traveling in positive direction. So now our actual solution was, हमने क्या assume किया था, हमने कहा था कि जो Ex है जिसका solution हम find करना चाह रहे थे, हमने assume किया कि it is product of three functions f, g and h. Okay, and now we know कि f of x किसके बराबर होगा, g of y किसके बराबर होगा और h of z किसके बराबर होगा. So what is f of x? F of x is equal to this thing, g of y इसके बराबर हो गया और इन तीनों को हमने इसका प्रोडक्ट लेना. ठीक है. So what you will get? You will get a plus e power minus j k x into x multiplied with b plus e power minus j k y into y multiplied with c plus e power minus j k z. तो ये हमने किस चीज का सोल्यूशन फाइंड कर लिया है, ex, which is function of x, y and z. Now of course ये constant है, ये भी constant है, ये भी constant है. So actually you are multiplying three constants. So multiplication of three constant will result into a constant. तो इस constant को हम simply product of three constants, इसको मैं simply a कह देता हूँ. So what is a? A is the product of these three constants. So we end up with this, and then we have these three functions: this one, and this one. So using the uh, rules of exponential functions, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, e power minus j within brackets में लिखूंगा kx into x plus ky into y plus kz into z. So far हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के x कंपोनेंट का जो सोल्यूशन का फॉर्म है वो इस तरह आ जाएगा. ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको ये नजर आ रहा है, इसको हम एक कह सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. वो किस तरह लिख सकते हैं कि हम अज्यूम करेंगे कि ये जो के एक्स के वाई के जेड है ये एक वेक्टर है जिसको हम के वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सच दैट इस वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स, इसका एक्स कंपोनेंट भी है, इसका वाई कंपोनेंट भी है और इसका जेड कंपोनेंट. तो दिस के is now a vector ठीक है, जिसके ये जो यहाँ पे आपको x और y और k z नजर आ रहे हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक वेक्टर है k जिसकी ये तीन कंपोनेंट. ठीक हो गया. और हम कह सकते हैं कि इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा जिसको हम k नॉट कह देते हैं. या इसको हम k कह देते हैं क्योंकि वहां पे मैंने k यूज किया था. लेट्स कॉल इट सिंपली k. और हमारे पास अगर एक वेक्टर हो जिसको आप r से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आप यूज करते हैं कौन से वेक्टर के लिए, जिसको आप कहते हैं पोजीशन वेक्टर. और पोजीशन वेक्टर को मैथमेटिकली आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि एक वेक्टर है जो कि
अलोंग एक्स एक्सिस जो है एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर है, अलोंग वाई एक्सिस उसका कोऑर्डिनेट वाई है, और अलोंग जेड एक्सिस उसका कोऑर्डिनेट जेड। ये जो दो वेक्टर्स मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, पोजीशन वेक्टर और ये के वेव नंबर वेक्टर, इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लें, ठीक है ना, अगर आप फाइंड करें कि के डॉट आर, तो के डॉट आर जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, के एक्स इंटू एक्स, के वाई इंटू वाई प्लस के जेड इंटू जेड आ जाएगा, विच इज द सेम थिंग विच यू फाइंड ओवर हियर। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो सोल्यूशन ई एक्स के सोल्यूशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आर्गुमेंट है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज इफ इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के एंड आर। तो यहाँ पे हम के डॉट आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास सोल्यूशन की जो फॉर्म है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गई है कि ई एक्स कैन बी रिटन एज ई, ए इज अ कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंशियल ई टू पावर जे, और हम लिखेंगे के डॉट आर। So now this is a better way of representing a solution. Now what we have done is, हमने क्या किया कि हमने स्टार्ट लिया कि हमने इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था। इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, और हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को पहले फाइंड किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का अगर एक्स कंपोनेंट हम कंसीडर करें, इट मींस कि अगर हम यहाँ पे ई एक्स का कंपोनेंट कंसीडर करें तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, वो हमने फाइंड किया कि वो इस तरह का होगा। सिमिलरली अब मैं अगर कहूं कि इस इक्वेशन का अगर हम y कंपोनेंट का सोल्यूशन फाइंड करें तो वो क्या होगा, फिर हम कहेंगे कि z कंपोनेंट का सोल्यूशन क्या होगा, तो वो, तो ये जो हमने जितना भी यहाँ पे अगर आप ex की जगह अगर आप इसको इस तरह लिखें, सिमिलरली फॉर y कंपोनेंट आप क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे डेल स्क्वायर ई वाई प्लस के स्क्वायर ई वाई लिखेंगे। अब ये आपके पास क्या है, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड अगेन यू नीड टू यूज सम काइंड ऑफ अ मेथड, और अगेन कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, यू नीड टू यूज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स यूज करेंगे और उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सिमिलरली फिर आप कहेंगे कि y कंपोनेंट का सोल्यूशन क्या होगा। अब क्योंकि इसकी इक्वेशन की फॉर्म तो भी वही है, इसका मतलब है कि फाइनली आपके पास जो अल्टीमेट सोल्यूशन आएगा y का कंपोनेंट का और z कंपोनेंट के लिए, सोल्यूशन एग्जैक्टली इसी तरीके से होगा, इसकी जो फॉर्म होगी वो यही होगी जो अभी हमने ई एक्स के लिए की है। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा कि ये मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे हमें ई एक्स को मैं के मैग्नीट्यूड को मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ई वाई का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर दूंगा या सी से कर दूंगा, और इसी तरीके से। तो मैं अब यहाँ पे करने लगा हूँ, जनरलाइज करने लगा हूँ, इसको मैं कहूंगा कि सिमिलरली द सोल्यूशन for the remaining y and z components of E will be, so EY का solution किस तरह का होगा, some constant and then e is to power minus j k dot r, और EZ का solution किस तरह का होगा, it will be some other constant, इसको मैं c कह देता हूँ, k dot r। now you can see कि हमने तीनों कंपोनेंट के सोल्यूशन को फाइंड रिप्रेजेंट कर लिया मैथमेटिकली, ये EX हो गया, ये EY हो गया और EZ हो गया। इसका मतलब ये कि हमारा जो टोटल सोल्यूशन है जिसको हम वेक्टर ई कहेंगे, अब इसका सोल्यूशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट किसके बराबर आ गया, ए टू पावर माइनस जे के डॉट आर,
y कंपोनेंट का सोल्यूशन किसके बराबर आ गया, सॉरी b e टू पावर माइनस जे के डॉट आर आ गया, और z कंपोनेंट का सोल्यूशन किसके बराबर आ गया, c e टू पावर माइनस जे के डॉट आर। सो ये जो हमारा ओरिजिनल जो हमारी इक्वेशन थी जिसको हमने सॉल्व करना था, इस वन, इसका सोल्यूशन जिसको हमने फाइंड करना था कि व्हाट शुड बी दिस ई वेक्टर, अब हमारे पास उसका मैथमेटिकल सोल्यूशन आ गया कि ई इसके बराबर होना चाहिए। ठीक हो गया। इस सोल्यूशन को हम फाइनल फॉर्म में लिखने लगे हैं। इसमें आप अगेन इस वेक्टर को हम कॉमन ले सकते हैं, इट इज एवरीवेयर, सो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। सो वी विल बी लेफ्ट विथ दिस थिंग, e to the power minus j k dot r। अब ये जो आपके पास नजर आ रहा है, ये एक वेक्टर है जिसके ये तीन कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट ए के बराबर है, वाई कंपोनेंट बी के बराबर है, जेड कंपोनेंट सी के बराबर है। इसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर is going to have this solution, some kind of a vector, इसको हम e naught कह देते हैं, and then e raised to power minus j k dot r। इसमें जो मैंने ये e naught वेक्टर है, इसको मैंने किसकी जगह लिखा है, दिस इज दिस वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे जिसको मैंने यहाँ लिखा हुआ, इसको मैंने e naught कह दिया। सो व्हाट वी हैव डन इज, हमने जनरलाइज सोल्यूशन फाइंड कर लिया। ठीक है ना। सो हमारे पास जो वेव इक्वेशन थी, ये वेव इक्वेशन थी हमारे पास। इसका जो सोल्यूशन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, विदाउट पुटिंग एनी, इफ रिमेंबर हमने इनिशियली हमने एजम्पशन के तहत इसका सोल्यूशन फाइंड किया था। हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, वाई और जेड जीरो है, तो सोल्यूशन क्या होगा। उसके बेस पे हमने सोल्यूशन निकाला और उसको इंटरप्रिटेशन असाइन की। इस वक्त जो हमने सोल्यूशन किया उसमें हमने कोई एजम्पशन अप्लाई नहीं की। हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये एक्स पे भी डिपेंड करता है, वाई पे भी डिपेंड करता है, जेड पे भी डिपेंड करता है, और इस वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है। तो अगर आप देखें, ये हमने ये वाला जो कंपोनेंट फाइंड किया हुआ है, दिस वन, ये वाला, ये एक्चुअली इसका एक्स कंपोनेंट है। ये जो हमने फाइंड किया है, ये इसका वाई कंपोनेंट है, और ये जो है इसका जेड कंपोनेंट है। तो बेस्ड ऑन दैट हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन आ गया जो कि इसके बराबर। सो व्हाट इज दिस इक्वेशन इज टेलिंग अस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेव है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, uh, वो उसके तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। और इससे हमें क्या पता चल रहा है, k डॉट आर से, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया था कि k डॉट आर का मतलब है कि वेव जो है ये पोजीशन वेक्टर है, और ये जो वेव नंबर वेक्टर है, इफ यू रिमेंबर, k को हम प्रोपगेशन के साथ इसको असाइन करते हैं, इसका ताल्लुक प्रोपगेशन के साथ है। इट मींस कि अगर प्रोपगेशन वेक्टर के एक्स कंपोनेंट भी है, वाई भी है, जेड भी है, इसका मतलब है कि वेव इज ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, इट इज आल्सो ट्रेवलिंग इन वाई डायरेक्शन, इट इज आल्सो ट्रेवलिंग इन जेड डायरेक्शन। सो वेव जो है वो एक रैंडम डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, और इस तरह प्रोपगेट कर रही है कि ट्रेवलिंग करते हुए वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रही है, वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रही है, और जेड एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रही है। ठीक हो गया। अब द पॉइंट इज, द फाइनल पॉइंट इज कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या बिहेवियर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या बिहेवियर होगा। इसका मतलब है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड का सोल्यूशन फाइंड करना होगा, जिस तरह हम पहले भी करते आए हैं। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज,
what is going to be H? So as before, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सोल्यूशन जब फाइंड कर लेते हैं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का सोल्यूशन हम वे मैक्सवेल इक्वेशन से फाइंड करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट इंडिपेंडेंट. सो हाउ टू फाइंड H when we know E? We make use of this third Maxwell equation, which is curl of E equal to minus j omega mu into H. So इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे ताकि हमें H का पता चले. So this is what we are going to do. So magnetic field solution is minus j omega mu curl of E. अब हमने कर्ल ऑफ E को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि पहले केस में तो हमने इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लिया था जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट था. अब इसको हम एक वेक्टर फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो लेट्स डू दैट. सो माइनस जे ओमेगा म्यू, हमने क्या करना है, कर्ल फाइंड करना है ई का, और ई किसके बराबर है, ई इसके बराबर. सो इन प्लेस ऑफ ई मैं लिखूंगा दिस वेक्टर इनटू दिस. सो वी नीड टू फाइंड आउट कर्ल ऑफ दिस वेक्टर. यहाँ पे मैं कुछ वेक्टर ऑपरेशन अप्लाई करूंगा. एक तो ये कि ये यहाँ पे आपको माइनस जे लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये प्लस जे हो जाएगा. सो वी हैव जे डिवाइडेड बाय ओमेगा म्यू एप्सिलॉन. एक तो ये मैंने कट लिया, ठीक हो गया. यहाँ पे हम एक कुछ वेक्टर आइडेंटिटी से अप्लाई करते रहेंगे. मैं इसको लिख रहा हूँ, फिर आप इसको चेक कर लेंगे. एक वेक्टर आइडेंटिटी तो मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ कि अ, इसको मैं, इस वेक्टर को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और इस ऑपरेटर को इसके साथ लिख लेता हूँ. सो वेन एवर यू इंटरचेंज द ऑर्डर इन क्रॉस प्रोडक्ट, अगर आप देखिए मैंने क्या किया कि मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है और इसको यहाँ पे लिख लिया. तो वेन एवर यू चेंज द ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स इन क्रॉस प्रोडक्ट आपको माइनस साइन लगाना पड़ता है. तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा माइनस जो. नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है. यू कैन सी दिस इज द ग्रेडियंट ऑपरेशन. ये ऑपरेशन आपके पास आ जाएगा माइनस जे डिवाइडेड बाय ओमेगा म्यू, और यहाँ पे आपके पास दिस फैक्टर है, दिस इज गोइंग टू बी माइनस जे e power minus j k dot r. सो इसका जब आप ग्रेडियंट ऑपरेशन लेते हैं तो यहाँ से आपके पास ये फैक्टर आ जाता है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस जे. Now what will happen, you have minus j and then minus, so minus minus प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर j स्क्वायर आ जाएगा तो फिर माइनस आ जाएगा. ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा माइनस डिवाइडेड बाय मेगा म्यू.
नाउ अगेन लेट मी चेंज द ऑर्डर। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है इसका मैं ऑर्डर चेंज कर लेता हूँ। पहले मैं के लिख लेता हूँ, फिर ई नॉट लिख लेता हूँ। अगेन ऑर्डर चेंज करने से फिर माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे अब प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज में आपके पास क्या होगा, मैं इसको लिख लेता हूँ, देन आई विल रेफर बैक टू। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम लोग, व्हाट आई एम डूइंग इज ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, तो पहले मैं के लिख रहा हूँ। सो के वेक्टर आ जाएगा डिवाइडेड बाय दिस ओमेगा म्यू फैक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट हम ले रहे हैं इसका किसके साथ, अब ये यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट ई टू पावर माइनस जे के डॉट आर। ठीक, मैंने अगेन क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज किया है, फ्रॉम द रूल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट माइनस साइन आ जाएगा, तो ये माइनस ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये अब आपके पास ये जो आपको नजर आ रहा है ई नॉट, इफ यू रिमेंबर ये एक्चुअली क्या चीज थी, दिस इज एक्चुअली वेक्टर ई नॉट एंड दिस इज एक्चुअली वेक्टर ई। तो यहाँ पे मैं वेक्टर ई लिख रहा हूँ अभी। सो से k डिवाइडेड बाय ओमेगा म्यू इनटू वेक्टर ई आ जाएगा, वेक्टर ई आ जाएगा। ओके, नाउ ये जो k वेक्टर है k, इफ यू गो बैक, आई थिंक इस सेशन में किया था या मैं नेक्स्ट में किया था, लेट मी चेक, यस। ये जो वेक्टर के है इसके बारे में मैंने क्या कहा था कि इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा जिसको मैंने के से रिप्रेजेंट किया था, और इसकी डायरेक्शन होगी जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और एन जो है ये एक्चुअली इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी ये एक्चुअली किस चीज की डायरेक्शन होगी, ये एक्चुअली प्रोपगेशन की डायरेक्शन को शो कर रहा होगा, क्योंकि ये जो के है इसको मैंने प्रोपगेशन वेक्टर का नाम दिया हुआ था। सो के की जगह, वेक्टर के की जगह मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक हो गया, सो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ कि इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा डिवाइडेड बाय ओमेगा म्यू होगा, और एन क्रॉस ई हो जाएगा। इस के को अगर आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में अब आपको जो नजर आ रहा है ओमेगा म्यू बाय के, इसको हमने क्या नाम दिया था, व्हाट इज ओमेगा म्यू बाय के, Intrinsic impedance. इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ईटा। ठीक है, सो फाइनली क्या फॉर्म आ गई हमारे पास, हमारे पास आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर ईटा n cross e, n cross e. Now what is the final conclusion about this equation, इस equation से हमें क्या important information मिल रही है, इस information ये मिल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो आपके पास आ चुका है यहाँ पे, जिसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया था, दिस वन। ठीक है, इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड वेक्टर होगा, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर देखें, मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की हम बात करें, व्हाट इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, इट इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। तो मैग्नीट्यूड का रिलेशनशिप भी हमें क्लियर हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विल ऑलवेज बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिवाइडेड बाय व्हाटएवर इज द इम्पीडेंस। but because this is a vector, so it must have some direction. So अब डायरेक्शन के बारे में भी हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, वो क्या है कि n क्रॉस e से जो डायरेक्शन बनेगी वो इसकी डायरेक्शन होगी। नाउ वी नो फ्रॉम द रूल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन है, और n जो ये वेक्टर हम शो कर रहे हैं ये किस चीज की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की। सो जिस प्लेन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लाइक करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लाइक करते हैं, ये दोनों आपस में ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, और जिस प्लेन में ये लाइक करते हैं उसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन।
So इसका मतलब है कि magnetic field is going to be perpendicular to the plane containing this vector and containing this vector. So it means magnetic field इन दोनों के परपेंडिकुलर हो गया, ई के भी परपेंडिकुलर हो गया और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की भी परपेंडिकुलर हो गया. अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑलरेडी आपस में परपेंडिकुलर है. तो अगेन हमारे पास किस तरह का बिहेवियर बन गया, किस तरह का फिनोमेना बन गया, टीएम. सो अब हमने इसको जनरलाइज फॉर्म में भी देख लिया कि इन फ्री स्पेस मीडिया whenever electromagnetic wave propagates, it propagates in such a way that direction of electric field vector, direction of magnetic field vector, and direction of propagation vector, they are always mutually perpendicular. This is the final statement that I wanted to make, and this completes this discussion of uh, wave propagation and its general solution. Any question you want to ask from today's lecture? Any question? No, sir. No, sir. Okay, thank you very much and see you next week. Allah Hafiz.